us live actually from the person who's been the man of the tournament for us. I don't want to jinx anything right now, but Mohammad Shami's residence in Amroha. Nikhil, the big thing that everybody's talking about is how there's going to be a new stadium coming up in Mohammad Shami's village. And you've been talking to a lot of people there. What are the residents telling you today? Well, अभी तो स्वीट्स यहाँ पे बटने वाली हैं. We can see some of the local people who have gathered here with sweets as well. सर ये बताइए, ये जो मिठाई है, ये स्टेडियम बनने की खुशी में है, फाइनल की खुशी में या शमी के परफॉर्मेंस के लिए? ये आज नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देने के लिए और शमी के लिए दुआएं करने के लिए. शमी ने जो इस अमरोहा को खुशी दी है, इस मिट्टी में पला हुआ एक हमारा बच्चा आज पूरी दुनिया में अमरोहा का, इस गांव का नाम कर गया. इसके लिए हम बहुत आह लेते हैं, बहुत खुश हैं. इसलिए शमी ने खुशी दी है. इस मिठाई से आप शुगर दे रहे हैं सब लोग को? शुगर नहीं, ये तो हमारी भारतीय परंपरा में जब कोई खुशी का मामला होता है तो मिठाई बांटी जाती है. मेरे कौन सी मिठाई है? ये बर्फी है. बर्फी है. अच्छा, आप बताइए किस तरीके से माहौल सजा है. थोड़ी देर में अभी टॉस होगा, फिर मैच शुरू हो जाएगा. किस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रबंध बना के बैठे हैं? माहौल ये है, आज हमारे बाहर के मेहमान भी आए हुए हैं भाई साहब, और आप भी हैं, पत्रकार बंधु भी है. बस कुछ ही देर में बस हमारे जो माहौल शुरू होने वाला है, और जो शमी भाई जो 9 विकेट लेंगे, कम से कम 9 विकेट लेंगे, और खुशी का माहौल है हमारे गाँव में. और जो है 3-4 बजे हमारे आतिशबाजी का प्रोग्राम है, आतिशबाजी भी करेंगे. बट कितना बड़ा आप एक स्टेप देखते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने भी अनाउंस कर दिया मिनी स्टेडियम यहाँ पे बनाने वाले. नंबर 1 पॉइंट ये है. दूसरी बात, आपके हिसाब से शमी के लिए इस बार क्या अलग था, क्या खास था कि ऐसा परफॉर्म कर? हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 5 करोड़ रुपए हमारे गांव के स्टेडियम के लिए दिए है. और भी कई सुविधा है और आगे भी सुविधा मिलेगी. आज भारत वर्ल्ड कप जीत रहा है, और भगवान ने चाहे तो आगे और भी कई योजनाएं हमारे गांव की मिलेंगी. कौन आपके हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला? आज मोहम्मद शमी फिर से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं. सभी को बहुत उम्मीदें हैं और इंडिया आज फाइनल जीतेगी, इतिहास रचेगी. Okay. So Shivani, this is the view, this is the word which is coming in all the way from the hometown of Absolutely. Mohammad Shami. So much happiness that Mohammad Shami has brought not just to Amroha, his home village, his hometown, but also to the entire country. And Venki, possibly to the entire world. You know, you've got experts and cricketers from all across the world, fans from all across the world really admiring and just relishing what Mohammad Shami has been serving up this World Cup. Yes, absolutely, Shivani. I think he's been, we have seen a resurgent Mohammad Shami, I would say, you know, not having played the first few games and then coming back and performing the way he has performed. I think it's fantastic. I think that shows one is his character, and also that he has worked hard, extremely hard on his lines and lengths by bowling a lot. Bowling a lot for his state side, playing playing domestic cricket, playing the 4-day game, and that's how you can one is bowl those lines and lengths that he has bowled in this competition, and also been extremely effective and consistent. So consistently is so. And you know the skill that we have seen in him bowling round the stumps again. I think we spoke that in the studio, bowling round the stumps for a left-hander and taking the ball away. It's not easy. It's not an easy skill to acquire. I think he has worked extremely hard. And the question from every one of us in this panel was why Mohammad Shami is not being picked in the playing 11 to begin with, isn't it? So. Better late than never. I think that was fantastic. And yes, talking about the pressure, I think we were all talking about the pressure. This team will have to sort of deal with the pressure in this particular situation, in this particular game, because there's a lot of expectations from this team. Whereas in 1983, there was not much of expectations. In 2007, Karthik spoke about in the T20 World Cup, there was not much of expectation. And also, we were not playing at home. You know, we are playing away. So in that sense, this team playing at home and the expectations are huge. So they have to deal with the pressure. And it's all about mindset, how they're going to go into this game. Yeah. Possibly the only other person who can tell us a little bit more about what that pressure is like for Rohit Sharma is MS Dhoni, because he lifted the trophy as a captain with that glorious 6 at the Wankhede at home, and the pressure of course was very high then as well. Speaking of pressure, Prime Minister Narendra Modi is tweeting about how 140 crore Indians are cheering for the team today, and he's wishing the Indian team all the very best. I'm guessing the number is going to be a little bit larger because Indians all over the world, regardless of where they live, what they do, what their citizenship is, mind you, are going to be cheering for the Indian team. And there should have been a postscript
no pressure. Well, the team is, I think, aware of just what the expectations are going to be like. I believe my colleague Akash is also joining us from the other member of this team who has had a glorious tournament and a record-breaking tournament, and that, of course, is Virat Kohli. Akash, can you hear me? Tell us a little bit more of what Virat Kohli's fans are telling you. His neighbors, I guess, isn't it? Well, Shivani, I cannot hear your question, but definitely you see the excitement is on its peak because at this point in time I'm standing at Kohli Colony. Some are calling it Kohli Colony, some are calling it Virat Colony, and you know the kind of photos that they are taking. You see Virat Kohli, when he was still preparing for all these journeys and in fact the World Cup. And I'll try to talk to the people as well. आप मुझे सबसे पहले तो फोटोज बताइए, कौन कौन से फोटोज आपने लिए? ये 2011 वर्ल्ड कप की फोटो है, जब यहाँ पे ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले जाने वाले थे, तब उसकी प्रिपरेशन चल रही थी. एंड विराट कोहली वाज स्टेइंग इन आवर LIC कॉलोनी इटसेल्फ. And this is me, this is my father, and this is the photo of 2011. These are the photos of exactly in the front of his house. So at that moment he was. और कब से कब तक रहे ये बताइए? 2009 से 2011 के बीच में वो यहाँ रहते. उनकी फैमिली बहुत काफी टाइम रही है यहाँ पे. उनकी मदर थी, उनके ब्रदर थे विकास कोहली. मुझे सबसे पहले बताइए कि आज के मैच को लेके क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी, और ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद शमी की बात लोग कर रहे हैं पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बाद, खासकर आज के मैच में बॉलर से ज्यादा उम्मीद है या कहें कि बैट्समैन से ज्यादा उम्मीद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मुझे लगता है कि सारे के सारे 11 प्लेयर से उम्मीद है हमारे को, और पूरे वर्ल्ड कप में यही प्लस पॉइंट रहा है कि सारे के सारे 11 प्लेयर्स ने अपना रोल एकदम एग्जैक्टली फॉलो किया है. बैट्समैन आर प्लेइंग एट द टॉप मोस्ट लेवल, बॉलर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो मतलब पूरी टीम को श्रेय जाता है. 10 विनिंग जो है वो आगे भी स्ट्रीक किया जाएगी एक मैच तक. आप मुझे बताइए 2008 से 2015 तक यहाँ रहे, आप में से कोई लोग हैं कि उसी कदम पे चल रहे हैं, उसी पाथ पर चल रहे हैं? अभी कॉलोनी में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि विराट से इंस्पिरेशन ले रहे हैं. वो लोग अपना कोचिंग भी करते हैं और प्रॉपरली विराट को फॉलो करते हैं. उसके वीडियो स्ट्रीम्स देख के एकेडमी में जाके उसकी टेक्निक को फॉलो करते हैं. और आई थिंक यही क्या कहते हैं, विराट कोहली इज इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन. एंड विराट कोहली के बाद भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. बहुत यंगस्टर्स आने वाले टीम इंडिया में. सो इंडिया का तो ये तीसरे के बाद पता नहीं अनगिनत और आगे वर्ल्ड कप आने वाले हैं. थोड़ा चीयर वियर कर दीजिए, बड़ा जोर. So you see, Shivani, today we are going to win. This is what the confidence says, and in fact, you see, tomorrow we are going to have 2+2 with Australia. But before that 2+2 ministerial dialogue, we are having 11+11 today, and all Indians are hopeful that today we are going to win the World Cup. Absolutely. Thank you so much, Akash, for bringing us more of those. 11 versus 11 today. I don't know what kind of a dialogue the team is going to have. It's not as much animosity anymore. A lot of them are friends, IPL versus a lot of other factors coming in.